ভারতের এত শহরে জল সংকট কেন, আমরা খোঁজ নিয়েছি, কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছি। সত্যি বলতে কারণ এক নয়, একাধিক, অনেকগুলো সমস্যার সংমিশ্রণ। প্রথম সমস্যাটার কথায় আসি। শহরগুলো ফুলে ফেপে উঠছে। এই শতাব্দীর শুরু থেকে জনসংখ্যা ৭৫% বেড়েছে। তার মানে চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে আর সরবরাহ সীমিত। কিন্তু এটা আংশিক চিত্র। অনেক শহর নির্ভর করে ভূগর্ভস্থ জলের উপর, মানে প্রাকৃতিক ভূগর্ভস্থ জলাধার। কিন্তু এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকে এই মজুদ পূরণের জন্য যথেষ্ট খোলা মাটি নেই। ফলে প্রকৃতি যতটা পূরণ করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি জল তুলে নিচ্ছি আমরা। দিল্লির মাটি প্রাকৃতিকভাবে যতটা পূরণ করতে পারে তার প্রায় দ্বিগুণ জল তুলছি আমরা। তার উপর সারা ভারতে শত শত নদীর জল দূষিত, কৃষির রাসায়নিক, নর্দমা, শিল্পের বর্জ্য, তালিকা লম্বা। প্রায় ৭০% ভূপৃষ্ঠের জল দূষিত। আমরা যে জল ব্যবহার করি তার বেশিরভাগ কখনো পরিশোধন বা পুনর্ব্যবহার করা হয় না, আর যে জল আছে তারও অনেকটাই হারিয়ে যায়। প্রায় ৪০% নষ্ট হয় লিকেজ, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো আর খারাপ ব্যবস্থাপনায়। সহজ ভাষায়, যা ব্যবস্থা আছে তা যথেষ্ট নয়, যা পাচ্ছি তা সংরক্ষণ করছি না, যা আছে তা অতিরিক্ত ব্যবহার করছি এবং বাকিটা দূষিত করছি। আর সমাধানগুলো কখনোই স্থানীয় বাসিন্দা ও তাঁদের বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে নয়। দক্ষিণ ভারতের এই মৎস্যজীবী গ্রামে অসন্তোষ বাড়ছে। মাত্র ৫ দিন হলো নদীটা আটকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই জল শুকিয়ে গেছে। திருப்பவும் நாங்கள் கடல் சார்ந்து இருக்கிற இடத்துலையும் সমুদ্রে நீங்கள் গেলে வந்து সমস্যা, எங்களை ব্যাক கஷ்டப்படுத்துறீங்க. ওয়াটারেও যেতে இப்போ দেবে না। வந்து இங்கேயும் তাহলে যাবোটা கஷ்டப்படுத்துறாங்க কোথায়? பக்கிங்க கால. அப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறது? আর না পেরে একজোট হয়েছেন অনেকে। গ্রামের কাছে একটা বড় প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। প্রকল্পটার লক্ষ্য ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত চেন্নাই শহরে জলের সংকট মেটানো। তাই তৈরি হবে বিশাল এক জলাধার। இந்த பண்டு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி 30 ৩০ কিলোমিটার কিলোমিটার লম্বা একটা বাঁধ তৈরি হবে। এর ফলে এলাকার স্বাভাবিক জল নিকাশ পুরো বদলে যাবে। বৃষ্টির জল বেরোতে পারবে না, পুরো জায়গাটা একটা ট্যাঙ্কের মতো হয়ে যাবে। மாதிரியான இடமா வந்து இந்த மாறும்। শহর প্রশাসন বৃষ্টির মরশুমে অতিরিক্ত জল ধরে রাখতে চায়, যা অনেক সময় বন্যা সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মে জলের উৎস শুকিয়ে গেলে ধরে রাখা জল শহরে সরবরাহ করা যেতে পারে। তাদের আশা, এতে উপকূলীয় মহানগরের জল সংকট কমবে। পরিকল্পনা হলো শহরের বাইরে থাকা প্রাকৃতিক ব্যাকওয়াটারকে একটা বড় জলাধারে পরিণত করা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে এই বাস্তুতন্ত্রগুলো কেবল লবণাক্ত জল নয়, এগুলো রক্ষা করা দরকার। So this act like a এই suspension. ব্যাকওয়াটারগুলো It একটি absorbs ঢালের the মতো কাজ catastrophic করে, waves, protecting the ভয়ঙ্কর বড় neighboring ঢেউয়ের ধাক্কা সামলায়, landscapes. আশেপাশের It এলাকা is রক্ষা করে। blocked. এগুলো আটকে Then দিলে the ঢেউয়ের waves গতিপথ will বদলে যাবে। start take in a different course. মেরিন বায়োটেকনোলজিস্ট টিডি বাবু এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি আজ আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন একটা ম্যানগ্রোভ এলাকার গভীরে। There is a vibrant lagoon এখানে একটা and প্রাণবন্ত which উপহ্রদ আছে। connects to the Bay of Bengal. In the উত্তরে north at মুটুকাডু আর Muttukadu দক্ষিণে কোকিলামেডুর and দিক south দিয়ে at বঙ্গোপসাগরের সাথে Kokilamedu. এটি যুক্ত। And both এই দুটো assurances মোহনাতেই ecosystem প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ দেখা as যায়। a natural mangrove habitat. And you can see এখানে অনেক lots of কাঁকড়া, অন্যান্য জলজ crabs প্রাণী and other এবং মাছ crustaceans দেখতে পান। and fishes coming in. অন্যদিকে চেন্নাইয়ে সমাজকর্মী রাজু পরিবেশগতভাবে দুর্বল জায়গার ওপর শহরায়ন আর উন্নয়নের প্রভাব নজরে রাখছেন। তার দাবি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন আর অবৈধ দখলদারির কারণে অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। சோ பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தோட பள்ளிக்கரணை சப்பேசின்ல உப்பு அபவாহিকার அங்க இருக்கிற সমস্ত ஃப்ளட் பிளேன்ஸ் প্লাবনভূমি எல்லாமே இப்போ ধ্বংস হয়ে பள்ளிக்கரணை গেছে। சப்பேசினும் পাল্লিকারনাই ও சரி কোভালাম கோவளம் சப்பேசினும் দুটো சரி জায়গাতে இது এই ரெண்டுத்துக்குமே গ্রেট வந்து সল্ট ஒரு লেকটাই ஒரு বন্যার ஃப்ளட் জল பிளேன்ஸ் தான் ধরে வந்து রাখার কাজ இந்த করছে। கிரேட் சால்ட் லேக் தான் நிக்குது। গ্রেট সল্ট লেক এই এলাকার অনেক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস, বিশেষ করে যারা সমুদ্রে মাছ ধরার মতো বড় নৌকো কিনতে পারেন না। அப்படி வேணா இந்த ஊர்ல இருக்கவங்களும் அப்படிதான், ওখানে கோவளத்துல অর্ধেক இருக்கவங்க মানুষ பாதி সমুদ্রের பேர் উপর வந்து கடலுக்கு নির্ভরশীল, போவாங்க, আর বাকিরা பாதி பேர் লেকের வந்து উপর। যারা লেকে ரிவருக்கு। মাছ ধরে அந்த তারা பாதி பேர் পুরোপুরি ரிவர் এর வந்து উপরই போறவங்க வந்து அந்த নির্ভর ஆத்துல করে। போறவங்க வந்து ஃபுல்லாவே அங்கதான் தொழில் அவங்களுக்கு।
এই উপকূলের বরাবর 15টারও বেশি গ্রামের মৎস্যজীবী ও আদিবাসী সম্প্রদায় একই রকম দুশ্চিন্তায় রয়েছে। প্রায় 1,20,00,000 মানুষের শহর চেন্নাইয়ের স্বার্থে কি নিজেদের দাবি ত্যাগ করতে হবে? আগেও এমন হয়েছে, তাই আশঙ্কা শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কাছেই নোনা জল পরিশোধনের বিশাল এক কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। வந்ததுல வந்து எங்களுக்கு வந்து வீடுங்க பாதிக்கப்பட்டது, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত அதுக்கப்புறமா হয়েছে, தண்ணியோட জলের মান খারাপ হয়েছে, தன்மை குறைஞ்சிடுச்சு। বছরে அது 4 মাস கரம்படி আমরা வேலை। তীরে জাল அது টেনে வந்து মাছ ধরি, வருஷத்துக்கு ஒரு সেটাও 4 ক্ষতিগ্রস্ত மாசம் হয়েছে। அது அந்த தொழில் அறவே பாதிக்கப்பட்டது। জল இது পরিশোধন போல কেন্দ্রটার ஒரு জন্য আমাদের கரத்தொழில் তীর மிகவும் ঘেঁষার பாதிக்கப்பட்டது। সমস্ত জীবিকা ஒரு ধ্বংস குறிப்பிட்ட হয়ে காலத்துக்கு। গেছে। அது வந்து கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்கத்திட்டத்தினால সমুদ্র গেলে திருப்பவும் সমস্যা, நாங்கள் கடல் சார்ந்து இருக்கிற ব্যাক ওয়াটারেও இடத்துலயும் যেতে நீங்க দেবে வந்து না, எங்களை তাহলে যাবোটা கஷ்டப்படுத்துறீங்க, কোথায়? இப்போ வந்து இங்கேயும் கஷ்டப்படுத்துறாங்க பக்கிங் கால। அப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறது? নোনা জল পরিশোধনের কারখানা ও উপকূলের জলাধার বাড়তে থাকা জলসংকটের সহজ সমাধান মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে বৃহৎ প্রকল্পগুলো সরাসরি ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রে স্থাপন করলে উপকারের চেয়ে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। இவங்க குடிநீர் கொண்டு কাছের வராங்கன்னா நான் শহরগুলোতে திட்டத்துல বড় நாங்க বড় மறுக்கல। হ্রদ আছে, நான் சொல்ற மாதிரி আমাদের மதுரை அந்த সমুদ্রের মতোই சேகல்பட்டுல বিশাল। பெரிய பெரிய ஏரி மேடம், கடல் সেগুলো வேற இருக்கு அந்த সংস্কার ஏரிலாம், করে அந்த ஏரியெல்லாம் মিঠা জল தூர்வாரி জমিয়ে தண்ணி ব্যবহার করা சேமிச்சு যায়। நல்ல நீர் அதெல்லாம்। ভূতত্ত্ববিদ ও জলবিজ্ঞানীরা নারায়ণের সঙ্গে একমত, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে গেলে বড় প্রকল্পই যে ভালো সমাধান তা নয়। அதாவது டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணலாம், কাজটা அதாவது ভাগ করে দিতে மற்ற পারে, இருக்கக்கூடிய জেলার நீர்நிலைகள், অন্য இந்த জলাশয় மாவட்டத்துல থেকে இருக்கக்கூடிய পলি நீர்நிலைகளை অপসারণ எப்படி করে தூர்வாரி সেগুলো পানীয় அதை জলের வந்து জন্য ஒரு ব্যবহার ஒரு করতে পারে। ஒரு குடிநீர் আর শিল্প தேவைக்கான ஒண்ணா প্রকল্পগুলো பயன்படுத்தலாம்। চেন্নাইয়ের இன்னொன்னு বাইরে சென்னை অন্য போன்ற জেলাতেও নিয়ে যাওয়া பெருநகரத்தை যেতে வந்து পারে। எப்படி வளர்ச்சியை வந்து வேற ஒரு মাவட்டங்களுக்கு நம்ம এরই মধ্যে জলাধারের কাজে বুলডোজার আর খনন যন্ত্র নেমে পড়েছে। স্থানীয়দের আশা সরকার তাদের কথা শুনবে, সম্প্রদায়গুলোকে রক্ষা করা আর চেন্নাইয়ের জল সরবরাহ দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য খুঁজে বার করবে।